today we have to start with May June 2024 paper 1 variant 3. So today we have to start with May June 2024 paper 1 variant 3. चलो start करते हैं 1 hour 15 minutes का paper है. So let's start with this. What is equivalent to 0.00005 joules? अच्छा जी, हमने बताना है कि क्या चीज equivalent है to this value. What we can do is we can take the decimal forward. एक place forward, दो place forward, तीन place forward, four place forward, five place forward and six place forward. अगर आप डेसिमल को 6 places फॉरवर्ड लेके जा रहे हो बेटा 10 की पावर -6 आगे लग जाएगी. व्हाट इज 10 की पावर -6? 10 की पावर -6 इज योर माइक्रो. तो यहाँ पे आप माइक्रो का सिंबल लगा दो. सी इज योर आंसर. 5 माइक्रो जूल इज योर आंसर. सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है. ठीक है. नाउ लेट्स फर्दर मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं. द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी सब्जेक्ट टू रैंडम एरर्स एंड टू सिस्टमैटिक. ओके, हम ये पेपर खत्म करने के बाद हम ये भी देख लेते हैं सवाल जो आपने सेंड किए. द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी सब्जेक्ट टू रैंडम एरर्स and to systematic errors. Which statement is correct? Systematic errors cannot be reduced by adjusting the apparatus. No. Systematic errors तो खत्म ही apparatus को ठीक करके होते हैं. Systematic errors can only be reduced by adjusting the apparatus or correcting the apparatus. This statement is not correct. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. कैन नॉट लिखा होगा. अगर यहाँ पे लिखा होता ना कैन बी करेक्टेड तो करेक्ट हो जाता. वी कुड हैव टिक मार्क दैट. A systematic error results in a different reading each time the measurement is taken. No, systematic error तो हर दफा सेम एरर देता है. Random errors are always caused by the person taking the measurement. No, this is also not correct. हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट मार्क करना है जो करेक्ट हो. Random errors can be reduced by taking averages. Yes, for sure. Random errors हमेशा averages लेने से कम हो जाते हैं. The Young's modulus of a material of a wire is found to be, okay, the Young's modulus E is given by this equation. ठीक है, Young's modulus की equation है. The wire is extended by a known force and the following measurements are made. Okay. Which apparatus has the largest effect on the uncertainty in the value of calculated Young's modulus? अच्छा जी, कौन सी मेजरमेंट जो है वो लार्जेस्ट इफेक्ट क्रिएट करेगी ऑन द अनसर्टेनिटी? बेटा इसके लिए आप पता है क्या करते हो. देखो, यंग्स मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला है? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला इज दिस. यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले में कौन कौन से वेरिएबल हैं? फोर्स का वेरिएबल है, एल का वेरिएबल है, डी का वेरिएबल है और एक्स का वेरिएबल है. राइट. So if I want you to calculate the percentage uncertainty in Young's modulus, बेटा जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन सी अनसर्टेनिटी या कौन सी मेजरमेंट लार्जेस्ट इफेक्ट क्रिएट करेगी, तो you assume the percentage uncertainty in Young's modulus. Percentage uncertainty in Young's modulus will be equal to the percentage uncertainty in force plus the percentage uncertainty in length plus 2 times the percentage uncertainty in diameter प्लस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स. अब हमने क्या करना है? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर आप नोट कर सकते हो तो मैंने 4 और पाई को इग्नोर कर दिया. वाई? बिकॉज दे आर कांस्टेंट. अब आपने देखना है इन सब में से लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, लार्जेस्ट इफेक्ट किसका है. So first of all, let's calculate the percentage uncertainty of length. 0.002 divided by 2.043 into 100. ये निकालो क्या आता है. Calculate the percentage uncertainty in length. ये क्या आता है? 0.002 divided by 2.043 into 100. ये percentage uncertainty क्या आ गई? 0.098 is your percentage uncertainty in length. अब डायमीटर की percentage uncertainty निकाल लो बेटा. 0.02 divided by 0.54 into 100. 0.02 divided by 0.54 into 100. This comes out to be 3.7% as your percentage uncertainty in D.
So let's calculate the percentage uncertainty in force. 0.01 divided by 19. इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे. इसको 0.01 divided by 19.62 multiplied by 100. 0.01 19.62 multiplied by 100. This comes out to be 0.05% as your percentage uncertainty in force. अब आप x के साथ भी निकाल लो. 0.2 divided by 5.2 into 100. What is the percentage uncertainty in x? 0.2 divided by 5.2 to 100. Percentage uncertainty in x क्या आ रही है? 3.85%. Now, just looking at the values, ठीक है, just looking at the values आप ये कहोगे कि सर एक्सटेंशन जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है. क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ रही है? 3.85%. जस्ट लुकिंग एट द सिंगुलर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप कहोगे सर एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा एक्सटेंशन में है. सो द लार्जेस्ट इफेक्ट विल बी ड्यू टू द एक्सटेंशन और एक्स. बट यू फेल टू रियलाइज दैट डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ वी आर मल्टीप्लाइंग अ 2. So what will be the total percentage uncertainty in diameter? 2 into 3.7, that is equals to 2 into 3.7 ये निकालो क्या आता है? 7.4%. तो डायमीटर जो अनसर्टेनिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 7.4% है. व्हाई? बिकॉज वी हैव अ स्क्वायर हियर, सो द अनसर्टेनिटी गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2. इज योर आंसर. अगर सिंगुलर आंसर्स देखते हो तो एक्सटेंशन है, लेकिन सिंगुलर आंसर्स नहीं देखने. हमने गलती नहीं करनी. डायमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर बाय 2. सिंपल, इजी पीजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन 4 की तरफ. टू फिजिक्स. हाँ हाँ, यस, ओके, ठीक है. चलो. टू फिजिकल क्वांटिटीज कंबाइंड टुगेदर एज अ प्रोडक्ट कैन प्रोड्यूस अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी. Which product of the two quantities produces a scalar quantity? अच्छा, हमने देखना है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है. ओके, लेट्स सी. Force into the displacement of the object in the direction of force gives you what? Work done. Work done क्या है? Work done क्या है बच्चों? Work done is a scalar quantity. It is always positive. A is your answer. Work done is a scalar quantity. Work done is basically your energy. Energy is a scalar quantity. A is your answer. ये देखते हैं जी. The diagram shows a velocity time graph for an object moving in a straight line. Okay. What is the displacement during the last 2 seconds of the motion? अच्छा जी, last 2 seconds कौन से हैं? 2 seconds से लेकर 4 seconds तक आपने क्या निकालनी है? Displacement. Now you must remember this key point. आपको एक key point याद होना चाहिए. Area under the velocity time graph is equals to displacement. Area under the velocity time graph is equals to displacement. हमने कौन सा एरिया निकालना है बेटा? ये वाला, this area. We have to somehow calculate this area. Area under the velocity time graph is equals to displacement. We have to somehow calculate this area. How will we calculate this area? This is basically a trapezium. And I a trapezium. How will you calculate the area of trapezium? Area of trapezium is equals to 1 upon 2 into sum of parallel sides into height. Okay, what are the parallel sides here, beta? Parallel sides कौन सी? ये है, that is 6. And you have this parallel side, that is what? ये parallel side क्या है? 12. Parallel sides क्या हो गई? 6 and 12. What is the height? बच्चे height क्या है? Height ये रही height 2. So let's input the values 1 upon 2. Sum of parallel sides क्या हो जाएगा? 6 plus 12.
into the height, that is 2. Cancel, cancel. Your distance or displacement comes out to be 18 meters. 5 ka answer comes out to be C. Let's further move ahead. A block is, अच्छा जी क्या लिखा हुआ है? A block is moving along a horizontal frictionless surface. A constant force F and a constant resistive force of 5 Newton, okay, acts on the block as it is moving in the direction of the force, okay. Direction of movement क्या है? Towards the right, perfect. ये force F कहाँ लग रही है? Towards the right, 5 Newton की resistive force लग रही है, as shown. The graph shows the variation with time t of the momentum of the block. अच्छा जी, momentum versus time graph given है. You have to calculate the magnitude of force F. आपने magnitude of force F calculate करना है. You have to calculate the magnitude of this force. How will you do that? First of all, बेटा, क्या आपको ये बात याद है कि gradient of momentum time graph is equals to your resultant force? Do you humbly remember that gradient of momentum time graph is equals to your resultant force? Sir, कैसे? I forgot that. Gradient क्या होता है? Change in y over change in x. What is on the y-axis? Momentum. What is change in momentum over change in time? It is equals to the resultant force. Can we calculate the gradient here? Yep. This point is 0 in the x-axis, 2.7 in the y-axis. ये point क्या है? This point is 0.4 in the x-axis, 1.5 in the y-axis. तो चलो इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं वापस. यहाँ पे 0 इंटू 2.7 एंड 0.4 इंटू 1.5. This is x1, y1. This is x2, y2. Can you calculate the gradient? Can you calculate the resultant force? Yep. y2 minus y1 over x2 minus x1. What is the value of y2? 1.5. What is the value of y1? 2.7. What is the value of x2? 0.4. What is the value of x1? 0. Can you calculate the resultant force here? 1.5 minus 2.7 divided by 0.4. Resultant force क्या आ गई? -3 Newton. The resultant force comes out to be -3 Newton बेटा. -3 Newton आपकी resultant force आ गई. लेकिन आपको रिजल्टेंट फोर्स थोड़ी चाहिए थी, आपको तो ये वैल्यू ऑफ एफ चाहिए. आप क्या करोगे? यू विल से द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एफ माइनस द 5 न्यूटन विच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. रिजल्टेंट फोर्स की क्या वैल्यू आई थी? -3. -3 इज इक्वल टू एफ -5. -5 को दूसरी साइड पे ले आओ. -3 plus 5 is equals to F. F is equals to 2 Newton as your answer. A is your answer. आ गई बात समझ में? Yes or no? इतना आसान है फिजिक्स इफ यू जस्ट अप्लाई लॉजिक. चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ. Newton's third law describes two forces that are equal in magnitude and form a pair. Which description of the two forces in such a pair is not correct? अच्छा जी, कौन सी description correct नहीं है? They act in opposite direction, they act on different objects, ये तो correct है. They are the same type of force, क्या ये भी correct है? जी बिल्कुल ये भी correct है. They are the same type of force. They cause an object to be in equilibrium. No, that's not correct. Newton's third law की जो pair of force है, they do not cause an object to be in equilibrium. The graph shows the variation with time of the speed of a raindrop falling vertically through air. बेटा इस तरह का स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते ही आपको क्या समझ आ जाना चाहिए? दिस इज अ टर्मिनल वेलोसिटी का या टर्मिनल स्पीड का ग्राफ. Which statement is correct? The acceleration decreases to produce a steady speed. Yes, this could be correct. क्यों? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी में एट स्टार्ट आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जैसे जैसे आपकी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. एंड इन दिस ब्लू रीजन या इन दिस येलो रीजन यू कैन से
your acceleration becomes 0. You reach a steady speed या terminal velocity. Okay. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? The acceleration decreases to produce a steady speed. A is your answer. Simple. अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं. Which statement about a perfectly elastic collision between two objects is correct? अब हमने correct वाला statement देखना है. Total kinetic energy is conserved and the relative speed of approach equals the relative speed of separation. पहला ही statement correct है. बेटा हमेशा याद रखो, इलास्टिक कोलिशंस में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड. एंड योर स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ सेपरेशन. लेट्स फर्दर मूव अहेड. The diagram shows the view from above a sprinkle system used to water a garden. Okay, ये एक sprinkle system है that is used to water a garden. The sprinkle consists of a tube of length this 0.15 meter आपकी length of tube हो गई. The tube is pivoted in the middle and spin in the horizontal plane as it lets out jets of water from each end. The two water jets are in opposite direction to each other. Each water jet exerts a force of 3 Newton. अच्छा जी, यहाँ पे भी 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है बेटा, यहाँ पे भी 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है. क्या आप रियलाइज कर सकते हो? दिस फोर्स एंड दिस फोर्स फॉर्म्स अ कपल. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो, ये 3 न्यूटन वाली फोर्स और ये 3 न्यूटन वाली फोर्स एक कपल फॉर्म करने. व्हाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द ट्यूब? टॉर्क कैसे निकालते हैं? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ अ कपल, आप क्या करते हो? एक फोर्स की वैल्यू लेते हो. यू टेक द वैल्यू ऑफ वन फोर्स, मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट? Multiply it by the distance between the two forces. एक फोर्स की वैल्यू क्या है? 3. Multiply by the distance between the two forces. Your answer comes out to be 0.45 Newton meter is your torque of a couple. 0.45 Newton meter is your torque of a couple. C is your answer. Simple. अब आ जाओ 11 पे. A third object. Okay. क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय 3 फोर्सेस. ओके, एक ऑब्जेक्ट को हमने इक्विलिब्रियम में हेल्ड किया हुआ है बाय 3 फोर्सेस. दीस फोर्सेस ऑल एक्ट इन द सेम प्लेन. ओके, द डायग्राम शोज टू ऑफ द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, दो फोर्सेस हैं जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं. द थर्ड फोर्स इज मिसिंग. व्हाट इज द थर्ड फोर्स? आपने बताना है थर्ड फोर्स क्या होगी. यस, हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? एनी आइडियाज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं. कैन यू रियलाइज दिस इज द हेड? कैन यू रियलाइज दिस इज द टेल? कैन यू रियलाइज दिस इज द हेड? कैन यू रियलाइज दिस इज द टेल? Currently both of the vectors are not satisfying the head to tail rule. So हम क्या करेंगे? ये वाले वेक्टर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस. ये 43 न्यूटन के वेक्टर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस, like this. Can you now realize this is the head of the vector, this is the tail of the vector? What will be this angle x? ये angle x क्या हो जाएगा? Angle x 125 plus x will be equal to 180 degree according to the corresponding angles. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 minus 125 that is equals to what? 55 degrees. x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 55 degrees. Okay. Can you mark the resultant vector? क्या आप resultant vector mark कर सकते हो? जी बिल्कुल सर. You will have your resultant vector like this. Oh. You have your resultant vector like this. Can you calculate this resultant vector बेटा? Yes. Cosine rule लगा लेंगे. Resultant का square is equals to 43 square plus 17 square minus 2 into 43 into 17 into cosine 55. Can you calculate this answer by 43 का square plus 17 का square minus 2 into 43 into 17 into cosine 55 taken under root. Resultant क्या आ गया हमारा?
36 Newton. Beta, now I want you guys to analyze what a resultant vector means. अब मैं चाहता हूं कि आप एनालाइज करो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर की इफ आई राइट द डेफिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर या फिर रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, व्हाट डज दैट मीन? वन वेक्टर or a single vector that replaces all the vectors and has the same effect. It has the same effect. बेटा इसका मतलब ये है कि ये 43 और 17 न्यूटन को अगर मैं एक वेक्टर से रिप्लेस करूं विद द सेम इफेक्ट, दैट विल बी दिस रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक बात ले रहे हैं सबको? अगर मैं 43 और 17 न्यूटन के वेक्टर को रिप्लेस करूं विथ वन सिंगल वेक्टर, दैट विल बी दिस रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब 43 और 17 न्यूटन जो फोर्स लगा रहे हैं उनको रिप्लेस करना चाह रहा हूं विद अ सिंगल वेक्टर, देन आई विल गेट दिस रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक बात ले रहे? नाउ इसका मतलब ये है अगर आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, इफ यू वांट द ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, you need a same force of 36 न्यूटन in the opposite direction। देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर तो 36 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहा है डायगनली। You need a force that is acting diagonally downward to balance the system out। B is your answer। A क्यों नहीं हो सकता? A तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 17 एंड 43 न्यूटन। आपने कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 17 एंड 43 न्यूटन को न्यूट्रलाइज कर रहा है टू बी इन इक्विलिब्रियम। बी विल बी योर आंसर, अ वेक्टर that neutralizes the resultant vector acting downward। Is this question clear to all of you? ये थोड़ा सा tricky। The total number of forces acting on an object is 2। The object is in equilibrium। Okay, so the total number of forces acting on an object is 2। The object is in equilibrium। Which statement about the forces are correct? The forces have equal magnitude। Yes, ये तो होना चाहिए। The forces must have equal magnitude। Okay. The two forces must act in the same direction। क्या equilibrium के लिए ये necessary है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये 3 न्यूटन की फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, दिस 3 न्यूटन की फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो दे don't have the same direction necessarily। I will cross this out। The two forces must act at the same point। Yeah, that must be true। So option B will be your answer। 1 and 3 are correct। Simple। Let's further move ahead। The diagram shows the arrangement of atoms in a particular crystal। Each atom is at the corner of a cube। The mass of each atom is this। The density of the crystal is this। What is the shortest distance between the center of two adjacent atoms? Basically, you have to calculate this x। अच्छा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा केमिस्ट्री का रिकैप ले लो। चलो, केमिस्ट्री का एक रिकैप ले लो। बेटा केमिस्ट्री में वन सेकेंड, लेट मी ब्रिंग इन अ पिक्चर द that is structure of one। अच्छा, केमिस्ट्री का थोड़ा सा अगर रिकैप ले लोगे तो केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि क्या समवट हियर। एक सेकेंड, केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि एक क्यूब के अंदर एक मास ऑफ एटम होता है। यू कैन राइट इट हियर एज वेल। यू कैन सी हियर एक क्यूब के अंदर देयर इज ओनली वन एटम। एक क्यूब के अंदर देयर इज ओनली वन एटम। यू कैन राइट इट हियर इन केमिस्ट्री। वन cubic structure is equal to one atom। तो बेटा यहाँ पे हमारा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये पूरी चीज आपका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू द
1 मास ऑफ एटम। ठीक है, ये पूरा क्यूबिक स्ट्रक्चर सिर्फ 1 मास ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कितने क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं? 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 फ्रंट साइड पे हो गए, 4 बैक साइड पे, 5 6 7 8 बैक साइड पे 4 हो गए, फ्रंट साइड पे 4 क्यूब्स बन गए। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे विजुअलाइज करना मुश्किल है, बट दिस इंटायर फ्रंट साइड हैज 4 क्यूब्स, और बैक साइड पे भी 4 क्यूब्स हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास कितने क्यूब्स हो गए बेटा? 8 क्यूब्स। तो टोटल मास ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 8 मास ऑफ एटम। मैंने कहा ये भी समझा ही दूं ना, क्योंकि पूरा पेपर जब क्लियर हो गया तो एक सवाल में मसला नहीं करते। अब आपने क्या निकालना था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास क्या आ जाएगा बच्चे? मास आ जाएगा 8 टाइम्स इंटू 3.5 इंटू 10 इज द पावर ऑफ -25 डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, दैट इज 9.2 10 इज द पावर ऑफ 3। निकालो जरा ये वैल्यू क्या आती है। 8 इंटू 3.5 इंटू 10 इज द पावर ऑफ -25 डिवाइडेड बाय 9.2 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3। क्या आंसर आ गया बच्चों? द वॉल्यूम का आंसर कम्स आउट टू बी 3.04 10 is the power of -28। Since we have a cube, तो हम क्या करेंगे? L cube is equals to 3.04 into 10 is the power of -28। L की वैल्यू निकालो, क्या आती है? L की वैल्यू comes out to be 6.72 into 10 is the power of -10 मीटर। आपने क्या निकालना था? आपने ये x निकालना है। अभी आप क्या निकाल के बैठे हुए हो? पूरा का पूरा एल लेंथ निकाल के बैठे हुए हो। कैन यू रियलाइज एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल? इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। एक्स क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 3.36 10 इज द पावर ऑफ -10। एनी क्लोज इनफ आंसर? सी इज योर आंसर। आ गई बात समझ? यस और नो शहजादो बताओ मुझे। Four measuring cylinders are filled with the same liquid to the height shown। अच्छा, same liquid का मतलब क्या है? What is the meaning of the same liquid? You have the same density. At which position is the pressure greatest? Where will the pressure be greatest? The pressure will be greatest at the maximum depth. A में आपकी depth क्या है? 0, because you are at the surface. What will be the depth at point B? Depth at point B is equals to the total distance 30 minus 10, that is 20 centimeter। C में क्या डेप्थ है? 10। D में क्या डेप्थ? C में क्या डेप्थ है? 0, because C is at the surface। D में क्या डेप्थ है? 10। Where is the highest depth? B। B is your point of greatest pressure। अब आगे बढ़ते हैं। In many filament lamps, as much as 92 joules of energy is emitted as thermal energy for every 8 joules of energy emitted as light। Okay, तो बेटा 92 joules of thermal energy आप emit कर रहे हो। This is your wasted energy। wasted energy wasted energy। And what is your useful energy? What is your output energy? 8 joules। What is the efficiency of the lamp? Efficiency किस तरह निकालते हैं? Output energy divided by input energy। Output क्या है? 8। Input क्या होगा? Wasted plus output, 92 plus 8, and you have to calculate in percentages. So let's do that. 8 divided by 100 into 100, your efficiency comes out to be 8%। A is your answer। आगे बढ़ते हैं। What is the unit of power? Power is equals to energy over time। Energy के क्या यूनिट है? जूल। टाइम के क्या यूनिट है? सेकेंड्स। D is your answer। joules per second is your unit of power। D is your answer for 16। आगे बढ़ते हैं भी। Now, an object is in a uniform gravitational field। The graph shows how the change in gravitational potential energy of the object varies with the vertical distance x moved by the object from the fixed point। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस मूव फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट का ग्राफ है। ओके, which graph shows how the gravitational force acting on the object varies with distance x। बेटा ये एग्जामिनर ने आपको पागल बनाने के लिए सवाल किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है?
ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब होता है वेट एम जी। डू यू थिंक आपका वेट वेरी करेगा विथ एनी डिस्टेंस? नो, the weight will remain constant even though you travel any amount of distance. C is your answer. Weight या फिर gravitational force constant रहेगी no matter how much distance that you travel. C is your answer. Okay, let's see this. A block of mass 2 kg is released from rest. Okay, ठीक है, आप release कर रहे हो from rest. That means your kinetic energy is zero. It travels 7 meters down the slope and falls a vertical distance of 3 meters. Okay, the block experiences a frictional force parallel to the slope of 5 Newton. अच्छा जी, आपके पास एक frictional force है, that is of 5 Newton. Perfect. Is there anything? Nope. What is the speed of the block after falling this distance? Okay, what is the speed of the block after falling this distance? Let's calculate it. Chalo, let's see. You have to calculate the speed of the block after falling this distance. So, beta, do you remember one of the equations that I taught in theory? If there is friction present in the question, energy at start minus work done against friction is equals to energy at end. जितनी आपकी स्टार्ट पे एनर्जी है माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू द एनर्जी एट एंड. At the start, you don't have any amount of kinetic energy, but you do have gravitational potential energy since you are at a height. What will be the gravitational potential energy? M, that is 2, G, that is 9.81, height kya hai beta 3, minus work done against friction. What is the friction force? 5 Newton. How much distance are you traveling in the direction of friction? 7 meters. Is equals to the energy at the end. Can you realize at the end point your height is zero, gravitational potential energy will be zero. The only energy that you will have at the end is kinetic energy. 1 upon 2 into mass into the velocity at end curve square. Cancel, cancel. What is your remaining answer? 2 into 9.81 into 3 minus 5 into 7. This comes out to be 23.86 is equals to the velocity at end curve square. Can you take an under root? Yep. The velocity at the end comes out to be 4.88. That is roughly 4.9 meters per second. A is your answer. 18 का आंसर है बेटा. सब चीजें जो नोट्स में पढ़ाई हैं वही अप्लाई होती, कुछ ज्यादा नहीं होता. Two wires, one made of brass, one made of steel, are stretched in an experiment. Both wires obey Hooke's law during this experiment. The Young's modulus for brass, अच्छा, Young's modulus for brass is less than the Young's modulus for steel. अच्छा जी, Young's modulus of जो brass है, वो less है compared to the Young's modulus of steel. Perfect. Which graph shows how the stress varies with the strain for both wires in this experiment? बेटा यहाँ पे एक और चीज है जो आप भूल गए हो. व्हाट इज दैट थिंग? बोथ वायर ओबे हुक्स लॉ. अगर आपका वायर हुक्स लॉ ओबे कर रहा है दैट मींस व्हाट? यू विल हैव अ लीनियर ग्राफ, यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन. अगर आपका ग्राफ हुक्स लॉ ओबे कर रहा है देन यू विल हैव अ लीनियर ग्राफ फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास is less than the Young's modulus of steel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए और सी को तो मैं देखते ही कैंसल आउट कर दूंगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कर्विंग. देन आई नो दैट द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर. तो स्टील का ग्राफ विल हैव अ हायर ग्रेडियंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. बी इज योर आंसर फॉर 19. सिंपल. लेट्स फर्दर मूव अहेड. A sample of material is stretched by a tensile force to a point beyond its elastic limit. The tensile force is then reduced to zero. The force extension graph is shown. Which area represents the net work done on the sample? हमने बताना है कौन सा एरिया रिप्रेजेंट्स द नेट वर्क डन ऑन द सैंपल. ठीक है, हाउ विल वी डू दैट? नेट वर्क डन ऑन द सैंपल कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनियसेस, कैन यू रियलाइज दिस इज द
लोडिंग का ग्राफ, दिस इज द लोडिंग ग्राफ। एंड व्हाट इज ये वाला ग्राफ, दिस इज अनलोडिंग का ग्राफ, है ना। दिस इज द लोडिंग का ग्राफ, दिस इज द अनलोडिंग का ग्राफ। कैन यू रियलाइज अनलोडिंग और लोडिंग के ग्राफ में there is some amount of permanent extension that is happening? Yep. So there might be some energy stored in the spring. That is your net work done. Net work done क्या हो जाएगा, ये पूरा green highlighted area. Sir, how do you know that this is the net work done? Let me explain again. देखो, during loading, how much energy is stored in the sample? बेटा लोडिंग के दौरान कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है स्प्रिंग? हाँ जी, ड्यूरिंग लोडिंग how much energy is stored in the sample? X plus Y plus Z. During unloading, how much energy is recovered? During unloading, during this phase, कितनी एनर्जी रिकवर हो रही है? Only Z. तो what is the net work done? हाँ जी, net work done क्या हो जाएगा? माइनस कर दो दोनों को, X plus Y. B is your answer. Simple. Let's move on to question 21. A wire is fixed at one end and extended by a force F1. ठीक है, एक वायर है जो कि फिक्स्ड है at one end and is extended by a force of F1 acting on the other end. This causes the wire to have an elastic potential energy of 0.15 joules. Okay. The force applied to the wire is now changed to F2. Okay. This causes the wire to change to a new elastic potential energy of 0.6 joules. Okay. The wire obeys Hooke's law. What is the relationship between F1 and F2? चलो F1 और F2 के बीच में relationship निकालना है. Perfect. So when your elastic potential energy was 0.15 joules, the force was F1. So 0.15 is equals to 1 upon 2 F1 into extension E1. Okay. बेटा extension E1 को आप किसी तरह replace कर सकते हो? Yeah, let's do it another way. Let's do it another way. Do you realize elastic potential energy किसके equal होती है? Elastic potential energy is equals to 1 upon 2 Fe. Can you somehow replace this E? क्या आप E की वैल्यू को replace कर सकते हो? जी सर. F is equals to Ke. Can I make E the subject here? Yes. F divided by K is equals to E. Place it here. F divided by K को इधर place कर दो. Elastic potential energy is equals to 1 upon 2 F into F divided by K. You will get to know why I did this just in a while. Elastic potential energy is equals to F square divided by 2K. सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? Can you realize extension is variable? Extension is a variable. Extension is varying. बेटा अगर एक्सटेंशन वेरी कर रहा है, आई कैन नॉट बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. If I want to build a relationship between elastic potential energy and force, मेरे बाकी सारे variables constant होने चाहिए. If I want a relationship between elastic potential energy and force, I want all the other variables to be constant. जैसे कि यहाँ पे देखो, this 2 is a constant. This spring constant is a constant. This does not change. What can I do? बेटा 2 भी constant है, spring constant भी एक constant है. You can take this 2K as constant. Elastic potential energy becomes directly proportional to the force the square. Now, can you realize your elastic potential energy was initially 0.15? Now it is 0.6. It is increasing by a factor of 4. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर ऑफ 4 से इंक्रीज कर रही है, तो फोर्स कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगी? 2 टाइम्स. Because if you increase the force by 2 times, elastic potential energy will increase by the square of that factor. 4 times increase करेगा. So what can I say? F1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, that will be equal to F2. F2 is equals to 2 F1. Any answers like that? C is your answer for 21. सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है इसमें.
The diagram shows a representation of a wave on the screen of an oscilloscope. The y gain is set to this. You have to calculate the amplitude of the wave. How will you calculate the amplitude of the wave? Very, very easy again. कैसे निकालोगे एम्पलीट्यूड? देखो थोड़ा सा गौर करो. This is the maximum position. 1, 2, 3, 4. This is the minimum position. ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है. या तो आप ये देख लो, या तो सिंपल सी बात आप ये देख लोगे. यू कैन फर्दर सी दिस थिंग के दिस इज योर मीन पोजीशन. दिस इज योर मीन पोजीशन. लेट्स से दिस इज योर मैक्सिमम पोजीशन. बेटा मीन पोजीशन से कितने बॉक्सेस ऊपर मैक्सिमम पोजीशन है? 2 बॉक्सेस. So 2 into the y gain setting, that is 3.5 into 10 raised to the power of minus 3 volts. That comes out to be 7 into 10 raised to the power of minus 3 volts. That is equals to 7 millivolts. C is your answer for 22. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं जी. A transverse progressive wave on a string has a wavelength of this. Okay, so this is your wavelength and has an amplitude of this. Okay. The speed of the wave on the string is this. Okay, this is the speed. What is the distance traveled by a point on the string in a time of 2 seconds? Okay, so we have to calculate the distance traveled by a point on the string in a time of 2 seconds. Let's first of all calculate the frequency. V is equals to F lambda. Velocity क्या है? 48. Lambda क्या है? 12. Can you calculate the frequency? 4 hertz. Can you calculate the time period? Yes. 1 over frequency is equals to the time period. 1 over 4 is equals to 0.25 seconds is your time period. That means one wave is getting completed in 0.5 seconds. बेटा गौर से देखते जाना. This is something that has appeared recently in the papers as well. एक wave complete हो रही है in 0.25 seconds. How many waves will get completed in 2 seconds? Can we apply ratio method? Yep. X is equals to 8 waves. ठीक है. बेटा 8 waves complete होंगी in 2 seconds. Perfect. Now how does a particle move on a transverse wave? इसको भी गौर से देख. Let's say this is a typical transverse wave. ठीक है. ये एक transverse wave है. ये आपकी main position है. Let's say you have a particle P here. How will this move in one time period? बेटा एक टाइम पीरियड में या एक वेव में ये पार्टिकल किस तरह मूव करेगा? देखो जरा, ये हमने कल भी डिस्कस किया था शायद. In one wave or in one time period, this particle will first of all move towards the mean position, covering one amplitude, then towards the maximum position, covering another amplitude. फिर ये वापस mean position पे आ जाएगा, covering another amplitude, again maximum position पे covering another amplitude. तो बेटा एक वेव में या एक ऑसिलेशन में आप कितने एम्पलीट्यूड कवर कर रहे हो? 4. So you can apply ratio method again. If you are covering 4 times the amplitude in one wave, 8 waves में या 8 ऑसिलेशन में कितने एम्पलीट्यूड कवर हो गए? 32 amplitudes. What's the value of one amplitude? 1.5. 32 into 1.5. What is your total distance traveled? 32 into 1.5. Total distance traveled क्या आ गया? 48 centimeter. 23 का आंसर is C as well. Let's further move ahead. 24 पे आ जाओ. An ambulance, okay, siren emits a sound with a single frequency. Okay, एक ambulance siren है जो कि emit कर रहा है sound with a single frequency. The ambulance travel towards and passes close to, then travels away from a stationary observer. Okay. Which statement describes the frequency of the sound detected by the observer as the ambulance passes the observer? अच्छा जी. जैसे ही एम्बुलेंस पास कर रही है ऑब्जर्वर को,
What will be the frequency of sound he observes? क्या लगता है बच्चों, क्या होगा आंसर? देखो, एम्बुलेंस जब आपके बिल्कुल सामने होगी, लेट्स से एम्बुलेंस इज हियर, so the frequency of sound emitted by the ambulance will be the same as the frequency of sound you hear. Initially अगर एम्बुलेंस आपके बिल्कुल सामने होगी, so the sound that you hear will be the same as the frequency of sound emitted. However, as the ambulance starts to pass away, However, as the ambulance starts to pass away, your frequency observed will decrease. It will become less than f. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या हेयर करोगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ. Then your frequency will keep on decreasing. A is your answer. An electromagnetic wave has a wavelength of 138 picometer in a vacuum. To which region of the electromagnetic spectrum does the wave belong? अच्छा जी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ क्या है? 138 पिकोमीटर. किस रीजन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंग करेगी? एक्स रेज. तो ये तो याद रखने वाली बात है ना. दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन. अच्छा, student investigates the polarization of microwaves. Microwaves from the transmitter are vertically polarized. ठीक है, vertically polarized microwaves. A metal grill act as a polarizing filter. Okay, ये metal grill है जो आपकी polarizing filter है. When placed between the microwave transmitter and the receiver. The reading on the voltmeter is proportional to the intensity of the microwaves transmitted through the grill. Okay. When the transmission axis of the grill is vertical, the voltmeter reads 3.5 volts. ये क्या हो गई आपकी incident intensity I naught. The grill is rotated through an angle theta so that now the voltmeter reads 2.2. This is your transmitter intensity. Can you calculate theta? Yep. I is equals to I naught cosine square theta. We will change this formula into V is equals to V naught cosine square theta. V naught क्या है बेटा? 3.5. V क्या है? 2.2. Can you calculate theta? Yep. निकाल लो theta. 2.2 divided by 3.5. This comes out to be 0.63 is equals to cosine square theta taken under root. This comes out to be 0.79 is equals to cosine theta. Take inverse of this. Theta comes out to be 37.5 degrees. A is your answer. 26 का answer is A. Let's further move ahead. Two waves superpose. A resultant wave pattern is formed. Which statement about the two waves must be correct? मतलब सुपरपोजिशन के लिए कौन सी चीज करेक्ट होनी चाहिए? The two waves are of the same type. Looks like a good option. बेटा अगर आपकी एक ट्रांसफर्स वेव है तो दूसरी भी ट्रांसफर्स वेव ही होनी चाहिए. A water wave passes through a gap in a harbor wall and diffracts. The gap has a width of 8 meter. ठीक है, गैप का width क्या है? 8 मीटर. The wave directly travels through the gap. For which wavelength is the diffraction greatest? बेटा diffraction greatest कब होती है? जब आपकी wavelength सबसे highest होती है. अगर wavelength आप 8 मीटर रखोगे, highest wavelength, you will have the highest diffraction. D is your answer. आगे बढ़ते हैं further. ये तो आसान पेपर था. There was only one difficult question in this entire paper. That was the crystal वाला. अभी तक वरना सब easy है. Light of wavelength this, okay, is incident normally on a diffraction grating. The diffracted light is incident on a semicircular screen as shown from above. There are a total of 9 bright dots formed on the screen. 9 bright dots का मतलब क्या है? एक यहाँ पे central bright fringe आ जाएगी. And then you will have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. You have a total of 9 bright dots. Okay. So if I draw it much more cleanly, let's not be lazy. This will be your n is equals to 0. This will be your n is equals to 1, 2, 3, 4. So what is your maximum order? बेटा maximum order क्या है? 4. 1, 2, 3, 4. ठीक है, maximum order क्या है? What is your maximum order? 4. Perfect.
The grating is at the center of the semicircle. The line on the gratings are vertical. The separation between the grating lines is d. Perfect. What is the possible value of d? You have to calculate the possible value of d. Beta, whenever we have to calculate maximum number of orders, जब भी maximum number of orders निकालने होते थे कोई फॉर्मूला लिखवाया था? हाँ जी, जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने होते थे बेटा कोई फॉर्मूला लिखवाया था? हम्म, जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने होते थे कोई फॉर्मूला लिखवाया था? n lambda over d must be less than 1. दिस वॉज योर फॉर्मूला. याद आ रहा है कुछ? थोड़ा सा मेमोरी को अगर हाथ मारो. n lambda over d must be less than 1. यहाँ पे n क्या होता था? n used to be your maximum orders, जो कि हमारे पास क्या है? 4. So we know that our maximum order will be 4. We know that whenever we have to calculate the maximum number of orders, we apply this formula. Let's make n the subject. Let's make n the subject this time. N must be less than d over lambda. Now trial and error with every value of d. बेटा हर value of d के साथ trial and error करो. जहां पे आपको maximum order 4 मिल रहा है, that is the correct answer. Okay, let's try out with option A. Option A में n must be less than what is the value of d? 2.25 10 raised to the power of minus 6 divided by lambda, that is 5.5 10 raised to the power of minus 7. ये क्या आंसर आ जाएगा? कैलकुलेट करो. 2.25 10 raised to the power of minus 6 divided by 5.5 10 raised to the power of minus 7. Your n must be less than what? N must be less than 4.09. Your maximum order here comes out to be 4. A is your answer. But let's try the other options as well just for our satisfaction. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन पे ट्राई कर लेते हैं ताकि अभी हम थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लें, एग्जाम में सेटिस्फाई हो जाए. लेट्स ट्राई आउट ऑप्शन बी. लेस देन लैंडा डी ओवर लैंडा. ठीक है, एन मस्ट बी लेस देन डी ओवर लैंडा. ठीक है, डी का ऑप्शन बी में क्या आंसर है? एन then 2.8 into 10 raised to the power of minus 6 divided by lambda, that is 5.5 10 raised to the power of minus 7. What is your answer? 2 point now you can put this fraction in the calculator और बस change करते जाओ. n must be less than 5.09. यहाँ पे maximum order क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे आपका maximum order आ रहा है 5, which we don't want. Maximum order 4 आना चाहिए. Cancel भी out. इसी तरह आप सी को भी टेस्ट कर सकते हो, डी को भी टेस्ट कर सकते हो. बोथ विल बी रॉन्ग. ठीक है, आ जाओ 30 पे. विच क्वांटिटी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा ये चीज याद है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज. वर्क डन और वोल्टेज और चार्ज को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वर्क डन और द एनर्जी डेसिपेटेड. 30 का आंसर इज बी. इस ये तो ऐसा सवाल था जो एग्जामिनर ने दिया था कि मार्क्स ले लो बेटा, मुझसे ले लो मार्क्स. The current in the filament lamp is increased. Which statement about the filament lamp is correct? भाई अगर आप current in the filament lamp increase करोगे, which statement is correct? The brightness of the lamp decreases. No. The temperature of the filament increases. Yeah, that's correct. और जितना ज्यादा आप करंट इंक्रीज करते हो अपने किसी भी घर के लैंप में, डू यू रियलाइज आपका जो नहीं पता इसका भी आंसर. चलो लेट्स डू इट भाई. A student builds the circuit shown. All the lamps are identical. Which lamp dissipates the most power? बच्चे कौन सा लैम्प मोस्ट पावर डिसिपेट करेगा? Which lamp will dissipate the most power? Can you realize सबकी रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं. पावर का क्या फॉर्मूला होता है? I square R. If the resistance of all the lamps become constant, power will be directly proportional to current का square. Can you realize the maximum current will be flowing in lamp D? लैम्प डी में मैक्सिमम करंट होगा. वाई? बिकॉज लैम्प डी में जो करंट होगा वो ब्रांच 1 से और ब्रांच 2 से कंबाइन होके आ रहा होगा. दिस विल बी द मैक्सिमम करंट I1 plus I2. Since the current in lamp D is the greatest, the power in lamp D will be the greatest as well. D is your answer. The resistance of a metal cube is measured by placing two parallel plates as shown. Okay.
The cube has a volume of V and is made of a material with a resistivity rho. The connections to the cube have negligible resistance. Okay. Which expression gives the electrical resistance of the metal cube between x and y? अच्छा जी x और y के बीच में आप resistance किस तरह निकालोगे? Very very easy. Resistance is equals to what? Resistivity into length divided by area. Okay. Now, how can you format it in the format जो यहाँ पे लिखा हुआ है? इस फॉर्मेट में किस तरह आप ये जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रियलाइज दिस इज अ क्यूब? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल क्यूब, है ना? क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट? एल क्यूब. सिंपल. And is made of a material with resistivity rho. The connections of the cube have negligible internal resistance. Perfect. Which expression gives the electrical resistance of the metal cube between x and y? हमने electrical resistance निकालनी है between x and y. Again, would you like to answer? Answer करना चाहोगे इसको? If you want to answer, you can do that. अगर नहीं करना चाह रहे, you can see that area is equals to what? या आप इसको इस तरह कह सकते हो कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया इनटू लेंथ. वॉल्यूम का ये भी फॉर्मूला होता है ना बेटा. सिंस दिस इज अ क्यूब, आपका एरिया क्या हो जाएगा? सिंस दिस इज अ क्यूब, आपका एरिया क्या हो जाएगा? या अगर मैं एरिया को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दूं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया. सिंपल. लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर. Resistance is equals to resistivity into length divided by what? Volume upon length. एरिया को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. लेंथ गोज टू द टॉप साइड. लेंथ ऊपर की तरफ आ जाएगी बेटा. तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम किसके इक्वल है? एल क्यूब के इक्वल है ना? वॉल्यूम किसके इक्वल है? एल क्यूब के इक्वल है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब. कैंसिल कैंसिल. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय लेंथ. अब ऑब्वियसली आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है लेंथ वाला. सो व्हाट विल यू डू? You will say take cube roots on both sides. Take cube roots on both sides. तो क्या हो जाएगा अगर आप क्यूब रूट लोगे बोथ साइड्स पे? क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का क्यूब रूट इज इक्वल टू लेंथ. प्लेस इट हियर. R resistance is equal to resistivity divided by the volume का cube root. Cube root can be written as volume की power 1/3. C is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. A circuit needs to be completed by connecting two resistors between point X and Y as shown. The resistors can be connected in series or in parallel with each other. Which combination of resistance produces the least resistance between X and Y? Obviously, least resistance कहाँ होगी? Parallel में होगी ना? और parallel में भी you choose the least options 20 and 40 वाले. A is your answer. हमेशा याद रखो least resistance parallel में होगी. COD cancel out. और उसमें से भी आपने लीस्ट रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन चूज करना है, 20 और 40 वाला. अच्छा देखो 35 को रीड करो वजह है बेटा. यहाँ पे आता. द डायग्राम शोज अ सर्किट दैट इंक्लूड्स अ सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, आपके पास एक सेल है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके. द स्विच इज इनिशियली ओपन. Which row describes the effect of current I1 and I2 after closing the switch? Okay. First of all, can you realize that these resistors all have a resistance of R? ठीक है. Now, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो, ये रेजिस्टर्स क्या करेंगे? पैरेलल में आ जाएंगे ना बेटा. जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, ये दो रेजिस्टर्स क्या करेंगे? पैरेलल में आ जाएंगे. पहले इनकी रेजिस्टर, अच्छा यहां पे देख लो. व्हेन द स्विच वाज ओपन, स्विच वाज ओपन, जब आपका स्विच ओपन था, आपकी रेजिस्टेंस क्या थी? आर. When you close the switch, both resistors come in parallel. आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R/2, है ना? जब आपका स्विच ओपन था बच्चे, तब आपकी रेजिस्टेंस क्या थी? सिर्फ R. When you close the switch, the resistance become R/2. Now, can you realize? अगर आपकी रेजिस्टेंस R/2 हो गई है, तो करंट तो डबल हो जाएगा.
तो दिस I1 दैट इज द टोटल करंट विल इंक्रीज। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गई है, रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, I1 इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी कैंसिल आउट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? परफेक्ट। नाउ व्हाट विल यू डू इज, अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आप ये करोगे कि अब देखो, अब आपने ये करना है, आपको I1 की तो समझ आ गई। अब सर I2 का क्या करें? I2 इज द करंट हियर। तो उसके लिए थोड़ा सा और एनालाइज करो, मैं उसकी सारी वर्किंग ब्लैक में कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी डू द वर्किंग ऑफ I2 इन ब्लैक। देखो, जब आपका करंट I1 इंक्रीज होगा तो द वोल्टेज अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट्स रिप्रेजेंट इट विद स्मॉल v, इज इक्वल टू व्हाट, V1 इनटू स्मॉल r। अगर आपका करंट I1 इंक्रीज हो रहा है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी, आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब मुझे बताओ बच्चे, ये I2 किसके इक्वल होता है? अगर मैं आपको कहूं सर I2 निकाल के दिखाओ, I2 हम निकालेंगे V इज इक्वल टू I2R से। अब इस रजिस्टर में कितना वोल्टेज आएगा? इट विल बी इक्वल टू द EMF माइनस द voltage across the internal resistance small v divided by R is your current I2। अब क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाला वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ये छोटा v इंक्रीज हो रहा है, hence the entire denominator will decrease, oh sorry, entire numerator will decrease। if the entire numerator decreases बच्चे, करंट I2 भी आपका डिक्रीज करेगा। C is your answer बच्चे। हाँ, is this clear बच्चे? बताओ, 35 का आंसर मैं एक दफा फिर से चेक भी कर लेता हूँ, या एट सी, आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक है। The diagram shows a circuit consisting of a cell and three resistors R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 लगे हुए हैं, ठीक है। The cell has an electromotive force of 1.6, negligible internal resistance, the current in the cell is 0.64 ampere, the potential difference at R1 is 0.48, the current in R3 is 0.32 ampere। okay, you have to calculate the resistance of R2। आपने R2 की रेजिस्टेंस निकालनी है, किस तरह निकालोगे बेटा? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे 0.32 एम्पेयर आ गया है, द रिमेनिंग करंट विल गो हियर। टोटल करंट क्या है? 0.64। 0.64 में से अगर 0.32 नीचे आ गया तो 0.32 ऊपर चला जाएगा, रिमेनिंग। ओके, नाउ 0.32 एम्पेयर यहाँ पे फ्लो कर रहा है। The total battery is of 1.6 volts. If this resistor is eating up 0.48 volts, इस resistor R2 के पास कितना बचेगा? 1.6 minus 0.48 बचे। ये निकालो जरा, क्या आता है? 1.6 minus 0.48, क्या आ गया आंसर? 1.12 volts is your voltage across R2। करंट क्या आ जाएगा? 0.32 एम्पियर। Can you calculate the resistance R2? V2 over I2। V2 क्या है? 1.12, 0.32। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, योर R2 comes out to be what? 3.5 ohms is your answer। कोई आंसर है ऐसा? C is your answer। सिंपल रखा है चीजों को, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया। Okay, let's see this. The diagram shows the potentiometer circuit used to compare the electromotive force E1 and E2 of two cells। ठीक है, E1 and E2 को आप कंपेयर कर रहे हो। X1 is a XY is a uniform resistance wire. The fixed resistor has resistance R। Okay. A sliding contact is moved along the wire XY when the sliding contact is at position P, the galvanometer reads 0। अच्छा जी, जब sliding contact position P पे तो galvanometer जो है वो reading 0 दे रहा है। Okay. The circuit is changed so that the galvanometer reading reads 0 when the sliding contact is at a position to the left। अच्छा जी, अब आपका सर्किट थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, सो दैट व्हेन यू आर एट दिस पोजीशन योर galvanometer रीड 0।
विच चेंज कुड हैव बीन मेड टू द सर्किट, सर्किट में क्या चेंज किया होगा कि अब आपका नल पॉइंट यहाँ पे अकर कर रहा है. The wire XY has been replaced with a wire of lower resistance. No. हो सकता है E2 की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया हो. नो. हो सकता है E1 की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया हो. नो. हो सकता है R की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया हो. यस, दैट्स पॉसिबल. व्हाई इज दैट पॉसिबल? क्योंकि अगर आप R की वैल्यू को डिक्रीज करोगे बेटा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस R विल डिक्रीज. देन दिस वायर XY will have a greater voltage. XY के अक्रॉस greater voltage आएगा. अगर XY के अक्रॉस greater voltage आएगा, so now you need a lesser length to equal the voltage E2 and to achieve the null point. Simple. D is your answer. अब आगे आ जाओ. न्यूक्लियस P has 144 neutrons, 93 protons. Nucleus P is unstable, okay, and undergoes alpha decay to form nucleus Q. अच्छा जी, न्यूक्लियस P अनस्टेबल है और अंडरगो कर रहा है अल्फा डिके. ओके, न्यूक्लियस P क्या कर रहा है? अंडरगो कर रहा है अल्फा डिके टू रीच न्यूक्लियस Q. न्यूक्लियस Q देन अंडरगोज बीटा नेगेटिव डिके टू फॉर्म न्यूक्लियस R. ठीक है, इस तरह की सिचुएशन बना लो. न्यूक्लियस P is situated as point P on the graph. Okay. You have to mark the nucleus R. Perfect. बेटा जब आप अल्फा डिके करते हो तो क्या होता है? योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज बाय 2. 144 से 142 हो जाता है. एंड योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीजेस बाय 2. 93 से 91 हो जाता है. Perfect. You are at this position currently. Now then you emit a beta negative particle. बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करते हो बच्चे तो क्या हो जाता है? बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करोगे तो क्या होगा? whenever you emit a beta negative particle your proton number increases by 1. जब भी आप बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करते हो, देखो बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करने पे क्या होता है? whenever you emit a beta negative particle what happens? your number of neutrons decreases by 1 and number of protons increases by 1. ओके, सो बी में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर मैं डिक्रीज करता हूँ बाय 1, आई रीच 141 हियर. देन आई इंक्रीज बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय 1, आई रीच द ऑप्शन ए. हमेशा याद रखो जब भी बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स इमिट होते हैं बेटा, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज बाय 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज बाय 1. ए इज योर आंसर. अच्छा जी, लास्ट सवाल क्या है? द डायग्राम शोज द कॉर्क कॉम्पोजिशन ऑफ 4 डिफरेंट हेड्रॉन्स. One of the hadron is a gamma plus particle. It has a charge of plus E. Okay. Where E is the elementary charge. ठीक है, हमने देखना है कि कौन सा जो पार्टिकल है वो प्लस E का चार्ज दे रहा है. ओके, D is your down quark, S is your strange quark, U is your up quark. ओके ओके ओके. डी, ऑप्शन डी को एनालाइज करो जरा. ऑप्शन डी में यू हैव वन अप quark 2/3. देन यू हैव another up quark 2/3. ठीक है. Then you have what? Then you have a strange quark, -1/3. टोटल क्या आ जाएगा चार्ज? पॉजिटिव E. D is your answer. 39 का आंसर क्या आ जाएगा? D. Which type of particle comprises of most quark? अच्छा जी, कौन से पार्टिकल्स में मोस्ट quarks होते हैं? ठीक है, एंटी क्वार्क में ना. बेरॉन में यू कैन से बेरॉन कैन हैव द मोस्ट quarks. ठीक है, बिकॉज ये 3 quarks से बना हुआ होता है. या लेप्टॉन में नहीं, मीजॉन में तो सिर्फ 2 quarks होते हैं. बेरॉन में 3 quarks होते हैं, so it has the most quarks. B is your answer. Is this clear to everyone? Geniuses. Yes or no? कोई सवाल इस पेपर में कोई ऐसी मुश्किल